Assalamu alaikum students, welcome again, welcome to the next session. That is, you can say, third session of our week 13 lesson, our lecture plans. Okay, now phases for solving the problem. Already we have discussed, ये वाली हमने slide discuss कर ली थी. Next, what we have to discuss right now, that is about, we can say, types of meeting. Now, what are the different types of meeting? Generally, general meetings की point of view से बात हो रही है. Meetings have two core purposes. जब भी हम बात करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल तो ग्रुप मीटिंग्स हैं हमारी, बट जब हम बात करते हैं कोर पर्पसेस और टाइप्स ऑफ मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दो बेसिक आपके पर्पस होते हैं फ्रॉम योर क्विज़ेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल दैट यू हैव टू नो to present the information and to help to solve the problem, right? So these are the basic two core purposes of any meeting. So this is what you have to know. So any meeting has, you can say, two basic core purposes: to present information and to help to solve the problem. Obviously, both purposes occur in all meetings. Three kinds of meeting have to achieve these objectives. So there are three kinds of meetings, or types of meetings, specifically to achieve these two objectives, to specific two purposes के लिए होता है. Now, first one is about informational meetings. Another one is about suggested solution meeting and problem solving. अब ये तीन जो काइंड्स ऑफ मीटिंग्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपको पता होने चाहिए स्पेसिफिकली टू कवर आर फॉर द सेक ऑफ specific purpose, to cover the purpose of the meeting. That means they want to present the information, they want to solve the problems, and they want to get the when the people wants to get the solution. तो जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, ओपिनियंस दे रहे होते हैं, थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारा प्रोसेस जब आप व्हेन यू हैव टू सिट टुगेदर एंड यू हैव टू वर्क ऑन दैट प्रोसेस, तो ये आपकी इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स होती है. And when you are like just you want to find out the problem, what's the issue, how you have to diagnose, what are the symptoms, what are the problems, what are the core issues, and so on, how we can find out how, what's the time issue and all that, types of problems, and then what's the major problem and all that. So when you have to sit together and when you want to find out the problems, so उस meeting को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग एंड सजेस्टेड सोल्यूशन मीटिंग. देन व्हेन यू नो अबाउट द प्रॉब्लम, जब आपको पता चल गया एंड राइट नाउ यू वांट टू कि अब हमें आइडिया हो गया सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, so now what you have to do is now you have to suggest the solution. So that is known as, that type of meeting is known as suggested solution meetings. उसमें फिर आप अपनी suggestion देते हो कि okay, these are the different types of solutions and this is how we can overcome all these problems. So these are the three types of informational, suggested solution and problem solving meetings. In detail, each and everything is available in your lesson plans also. Thank you students. Now next हम slide पे move करते हैं. तो नेक्स्ट जो हमारा, वो तो हमारी टाइप्स ऑफ मीटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मीटिंग फॉर्मेशन प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. This one is about another thing regarding when we are talking about meetings, group decision making. Now, what's the basic purpose of group decision making? ये भी आपके एक टॉपिक दिया हुआ है. स्टैंडर्ड एजेंडा फाइंड आउट करना. What's the standard agenda? First of all, what we have to find out when we are talking about standard agenda, it's also known as linear process of 6 steps. So first of all, you have to identify the problem, right? Right, students. That means we are talking about the problem identification. What's the अभी जो हमने discussion की. The next one is the problem analysis, or to analyze the problem. That is about standard agenda when we are talking about any effective meeting. So you have to identify the problem. You have to find out what are the, you can say, positivity, negativity, and how we can overcome that problem and all that. So properly analyze करते हैं आप उसको. Criteria selection, and you have to find out what's the standard, what are the criteria, what are the goals, and identify the minimal criteria for solution.
So this is what you have to identify, and what will be the standard solution, or what will be the standard through this method, टेक्निक्स क्या होंगी, मेथड्स क्या होंगे, वो सब आप आइडेंटिफाई करते हो. सोल्यूशन जनरेशन, जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, प्रॉब्लम को एनालाइज कर दिया, उसका स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, उसके सोल्यूशन की टेक्निक्स, मेथड्स बता दिए. जनरली जो हम मेथड्स बताते हैं कि आपने ये यू कैन से लूप यूज़ करना है, आपने स्ट्रक्चर्स यूज़ करने हैं, फंक्शंस यूज़ करने हैं, या आपने ये स्पेसिफिक टूल यूज़ करना है. तो आपने टूल, टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए, प्रॉब्लम को एनालाइज कर दिया. नाउ यू हैव टू जनरेट द सोल्यूशन. अब आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और उसको जनरेट करना है, एंड देन create as many solution as possible. It's up to you, whatever number of, like हमारे पास ये ऑप्शन भी होनी चाहिए. हम घर जा रहे हैं तो we have to find out कि what are the problems regarding our destination. तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा, अगर हमारी रोड ब्लॉक होती है तो हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, दूसरे रास्ते से भी, लाइक सदर जा रहे हैं तो मरी रोड से भी जा सकते हैं, हम जावर रोड से भी जा सकते हैं. So which one is the shortest way? Then this is what then we have to analyze. So we have to generate the solution. This way we can say one, two, three, the number of solutions we have to find out. And then we have to evaluate the solution and select the best one. हम कहते हैं कि हमने सदर जाना है तो डेफिनेटली आप अगर सपोज मरी रोड से जा रहे हैं और फ्रॉम दुबई प्लाजा जा रहे हैं तो डेफिनेटली अगर तो रश नहीं है तो दैट इज़ द अप्रोप्रिएट वे. बट एट द सेम टाइम आप इस्लामाबाद से जा रहे हो या रावर रोड से जा रहे हो, वट, और आपको टाइम, ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा है, तो what will be the then best one? Best on the basis of what? Best on the basis of time, money, and another one is about resources. That means your energy. So time, energy, and your money. That is cost. That is very important. सो मिनिमम टाइम के अंदर, मिनिमम कॉस्ट के अंदर, कम से कम आपका टाइम लगे, कम से कम कॉस्ट लगे, पेट्रोल लगे, आपकी एनर्जी ज़्यादा सेव हो, इतनी ट्रैवलिंग ना करनी पड़े. These are the basic three major, you can say, points are the factors regarding optimization of anything. Like अगर आपने optimized result लेना है, efficient result लेना है, तो उसमें this is how time, energy and cost, that is very important. On the basis of that, then you can select the best solution, and at the end, then you have to implement the solution. So this one is about group decision making, and in which we have to identify the standard agenda, and in which we have identified these number of set of steps. Again, you have to know these are very important steps, students. Now, next one is about planning the meeting. How we can plan about the meeting. Very simple, students. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. वही वाली चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं को प्लानिंग ऑफ द मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है. Now we have to define the purpose first of all. Whenever we are making the, you can say, preparing for the meeting, we are planning for the meeting. So first of all, we have to define the purpose, decide who will be the participant and who has to participate, arrange for the meeting, what will be the date, time, place, what will be the agenda of the meeting, announce the meeting, check on physical arrangement and so on. So इसी को हम इन पॉइंट्स की फॉर्म में देख लेते हैं कि जब हम प्लान कर रहे हो तो what are the 10 basic tips for effective meeting. What's the desired outcome? That is the basic, you can say. First of all, you have to know what's the basic purpose, what's the basic objective, and who is needed for that reason. क्या कौन कौन चाहिए, and do we all, इसमें आपके पास 5 W's भी आ जाते हैं, who, what, when, where, and how. One age जिसको हम कहते हैं, who will be responsible, what you have to do, how you have to do, what will be the method, and where you have to implement, what will be the place, organization, department, how you will implement, what will be the technique and method. So 5 W's could be used for सकते. Who is needed, and do we all know the agenda? So that means we have to identify the standard agenda also. Stick to the timing. That means you have to define the timing. Allow time to prepare the meeting. Select the best venue. It's very important, and it affects a lot. उसका भी एक स्पेस, प्लेस का भी एक स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस होता है.
check the resources. You have to check the resources. What are the different types of resources and all that. Confirm everything as per the requirement up to the mark. Have a plan A or B, whatever. If you are not following this plan, कोई इंडिविजुअल नहीं आता तो ओके ये नहीं आता तो इसको हम बुला लेंगे और इस तरह हम इसको मैनेज कर लेंगे. अगर हमारा ऑल्टरनेट सोल्यूशन की बात हो रही है, अगर हमारा ये वाली टेक्निक और टूल्स यूज नहीं कर सकते तो दूसरा कैसे यूज करेंगे. एंड देन यू हैव टू गेट द फीडबैक वेदर इट्स अकॉर्डिंग टू द requirement, get the output and so on. So students, this one is about second session of our video 13. Next हम next session में start करते हैं. Thank you students.